Hello everyone, welcome back to my channel. So this is day 2 in मंदारमनी और आज का vlog काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है because in this video I'm gonna show you our beach moments, our bonfire night and many more. तो यहाँ सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था, हम लोग इस रिसोर्ट के प्राइवेट बीच के तरफ निकल चुके थे एंड एज यू गाइज कैन सी कि इस रिसोर्ट कितना ज़्यादा स्पेसियस और खूबसूरत है और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं और किसी ड्रेस कलर मैच करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करें बीच पे. सो वी वर रेडी. हियर कम्स द प्राइवेट बीच ऑफ दिस रिसोर्ट. एज यू कैन सी यहाँ क्राउड बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे कृषिका वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज उसको एक सी शेल मिला था. হাতে টাচ করো এটা यहाँ मेरा पापा का फोटोशूट चल रहा है और यहाँ मेरी मम्मा मायरी को लेके बैठी है और यहाँ मेरी कीजू अपनी जीजी के साथ एंजॉय कर रही है. And here Kizzy is playing football with her dadai. और यहाँ हम बहुत सारे ब्यूटीफुल शॉट्स लिए मदर डॉटर मोमेंट्स का, जो कि मैं इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी. एंड हियर कम्स माई मायरू. बीच में ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे वापस अपने कॉटेज में, क्योंकि हमारा ड्रेस बहुत ज़्यादा भीग गया था. तो हम लोगों ने फटाफट चेंज किया और यहाँ लंच करने बैठ गए थे. और यहाँ मैं कीजू का ड्रेस चेंज करके ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट पहना दी थी, जो मेरे पापा लाए थे बड़ी प्यार से फ्रॉम दुबई. आप सब कमेंट पे ज़रूर बताना कीजू कितना प्यारी लग रही है. हम जैसे ही बाहर बैठ के लंच कर रहे थे, यहाँ लिटिल लिटिल किटीज़ आ गए थे जो काफ़ी क्यूट थे. तो खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके हम सब निकल गए थे शाम में मंदारमनी का जो मेन बीच है वो देखने के लिए. और ये रहा हमारा हमजा अली जो मायरू का बैग लेके भाग रहा है. तो फाइनली हम मंदारमनी का मेन जो बीच है वहाँ पहुँच चुके हैं और कीज़ी यहाँ पे अपना राइड एंजॉय कर रही है. आगे देखो
हम लोग सनसेट के टाइम पे पहुंचे थे तो बीच बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और शाम भी हो चुका था। बाहर ठंड था तो हम लोगों ने चाय मंगाया, लेकिन ये चॉकलेट टी था जो मम्मा को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट यहाँ पे कीज़ी को बहुत अच्छा लगा। कीज़ी वैसे नॉर्मली चाय नहीं देती हूँ मैं उसको, बट फिर भी बाहर इतना तो चलता है क्योंकि वो मनवा लेती है सारा बात अपने दीदू दादा के थ्रू। गरम गरम चाय पीने के बाद आई वॉज क्रेविंग अ लॉट फॉर दोई फुचका, सो हियर इट इज़। सो आफ्टर बीच व्हेन वी केम बैक टू आवर रिसोर्ट, रिसेप्शन कुछ ऐसा सजाया गया था बिकॉज इट वॉज क्रिसमस नाइट। रिसेप्शन में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ कॉटेज आ गए थे, कुछ देर रेस्ट किए और फिर से निकल गए थे हम लोग बॉनफायर के लिए। Here Kizu is enjoying her soup. So here we ordered some appetizers. और यहाँ मैं और किसी नाटी डांस कर रहे थे जो कि हिमाचली डांस है, पता नहीं क्यों हमें नहीं आता है, फिर भी जस्ट टू एंजॉय एंड मेक दोज मोमेंट्स मेमोरेबल। So these are my cuties, my hearts. आज का दिन बहुत ही अच्छा था और हम सब बहुत एंजॉय किए एंड दैट्स अ रैप। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप लविंग मी। बाय बाय।